Hello friends, welcome back. And in this video, I'll be sharing the assignment solution of IBO 01, fourth semester. And this is question number 1, part A. Define international business environment and differentiate between micro and macro environment. Simple question hai. And just what you need to write this definition of business environment like it is an internal and external uh, combination of all those factors that affect the operations of the business enterprise. And then you will write the difference between micro and macro environment, which is quite easy, right? So the second part of the question is on political risk. Discuss the major types of political risk along with this. So as we know in international trade, like a firm faces this particular risk, political risk, and there are different types of risk which a company faces while it imports or exports with other countries. Now these are all important points where you can write your answer. These are the important reasons like geopolitics, which are basically cross border crisis, and we have internal conflicts between the countries. The laws, regulations, policies of different countries are different, so that is one of the problem. Then there are some breaches in the contract when agreements are not lawfully accepted by the countries, then that becomes a breach. And then there are corruptions in few countries which also affect the international traders. Then we have extraterritorial reach. So this is again a very important region for political risk. So I have highlighted 10 points in this. So you can pick up all the 10 or even 7 or 8 points. Then we have some natural resources manipulation and social activism, which is also responsible, act as a political risk. Then there are some type of terrorism which are present in some of the countries of the world, so that also hinders the international trade. Then there are some cases of cyber crimes which are increasing day by day, so that also affect the international traders. Question number 2, part A. Explain the various theories for the emergence of TNC. TNC stands for transnational corporations. And in this chapter, IBO 01, we have different theories which are mentioned. The first one you can highlight in your assignment is Heimer's market imperfection theory. And way back in 1960, it was proposed by Heimer. And basically, this theory, it emphasizes more on certain ownership advantages and some controls on FTI. And you can, I have highlighted here some 5 points in this Heimer's theory. Don't write much in this because it's a theory, big theory. Just highlight your answer. ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है, ओनली हाईलाइट करनी है आपको कि मेन क्योंकि बहुत ज़्यादा फिर लंबा हो जाएगा आंसर. सो 10 मार्क्स के क्वेश्चन के हिसाब से दिस इज सफिशिएंट. देन यू कैन मेंशन दिस रेमंड वर्नन्स थ्योरी विच इज़ बेस्ड ऑन प्रोडक्ट लाइफ साइकिल. एंड यहाँ पे प्रोडक्ट लाइफ साइकिल 3 स्टेजेस हैं इन द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स. लाइक फर्स्ट स्टेज वेयर द प्रोडक्ट इज़ न्यू. In the second stage, the product is matured where a firm enjoys more profit, more sales. And in the third stage, ultimately, the demand decreases and the product becomes dead. So this is Raymond's theory. Then we have Mark Cashin's market failure theory. So this theory also you can highlight in your answer. And let me just brief you up a little bit. Like this theory is based on international resource allocation, and here like TNC is assumed to be multi-activity and engages in the internal transfer of intermediate products and across the national boundaries. And here a TNC produces different points of value added chain and in the different countries, and as a result of which the firm enters into international trade. And a few reasons for this situation like this cross border transactions, another reason for transnational market failure, so that becomes a reason for coming into international arena. Then we have the third region, that is transnational market, which
basically arises whenever the domestic market fails. Then we have the next theory, that is McManus transaction cost theory. And this theory, let me little bit brief you of. Okay, now according to this theory, TNC undertake foreign direct investment to raise efficiency and reduce transaction cost, like cost of information, cost of enforcement, and cost of bargaining. So basically, this is the main subject matter of his theory. And for this internalization, few popular methods are used here, like equity joint ventures and spot purchases, long term contracts. Then we have counter trade, turnkey projects, franchising. So through all these methods, a TNC enters into a foreign market. The next theory is from John Dunning's eclectic paradigm theory, and it was developed in 1979. And basically, here this theory focuses more on company specific advantages. On, a company having a superior technology can basically overtake the other company and other countries also. So on the basis of this theory you can highlight in your answer. Okay, question number 2, part B. The question is, highlight the main advantages and disadvantages of TNC for the host country. तो ये कुछ कंट्री, TNC जैसे कि हम लोग जानते हैं मल्टीनेशनल कंपनीज के जैसी होती हैं, मोर और लेस. एंड कुछ एक प्रॉब्लम्स आती है यहाँ पे होस्ट कंट्री को, एंड कुछ इसके एडवांटेजेस भी हैं. तो सबसे पहले देख लेते हैं कि मेन एडवांटेजेस जो होस्ट कंट्री को मिलने वाले हैं फ्रॉम दिस TNC. फर्स्टली फॉरेन कैपिटल आता है कंट्री में, तो वहाँ से बहुत एडवांटेजेस मिलती हैं. एंड देन वी हैव एडवांस टेक्नोलॉजी जो TNC लाती है अपने साथ में, एंड इट प्रोड्यूसेस अ लॉट ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द होम सिटीजन्स. Then we have foreign exchange, development of human resources, उनकी skills. Then we have it promotes healthy competition in the domestic market. Then growth of domestic firms, standard of living. Basically TNC और MNC के advantages एक ही हैं, disadvantages भी एक जैसे ही हैं. Let's see the basic, the important disadvantages. The first one is disregard to national goals. जो अपनी कंट्री के, जो डोमेस्टिक कंट्री के जो गोल्स होते हैं उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते TNC. एंड बेसिकली इनका मेन ऑब्जेक्ट होता है प्रॉफिट कमाना. एंड सेकेंड पॉइंट में आप लिख सकते हैं थ्रेट टू नेशनल सॉवरेंसी, एलियन कल्चर, फॉरेन कल्चर को यहाँ पे बढ़ावा मिलता है, फॉरेन कल्चर कैन डोमिनेट द डोमेस्टिक कल्चर. Then obsolete technology can be used by TNC while doing business in the domestic country. Then we have excessive remittances which can affect the balance of payment of the host country. Then it creates monopoly. Then restrictive clauses are there and depletion of natural resources. तो ये 8 पॉइंट हैं जो आप हाईलाइट कर सकते हैं in its disadvantages. Okay, question number 3 is give comments. The first one is tariff barriers are not the only instrument to restrict trade and give protection to the domestic import competing industry. तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि टैरिफ दो टाइप के होते हैं, and tariff and non-tariff. So basically these tariffs are a type of tax imposed by the government on the goods imported from foreign countries. And ये टैरिफ्स अगर हम लोग बढ़ा देते हैं तो ऑब्वियसली द वॉल्यूम ऑफ इम्पोर्ट विल रिड्यूस. एंड अगर गवर्नमेंट अगर इनको अगर कम कर देती है तो ऑब्वियसली imports will be more. These are few types of tariffs like ad valorem tariffs, specific tariffs, import quotas, compound duties. Then we have protective tariffs, licenses, वॉलेंट्री एक्सपोर्ट. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट हैं जो टैरिफ्स जो एक कंट्री इम्पोज करती है. एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स की बात करते हैं. एंड बेसिकली यहाँ पे दिस नॉन टैरिफ बैरियर्स आर बेसिकली ए नॉन टैरिफ ट्रेड बैरियर्स वेयर ए कंट्री वांट्स टू रेस्ट्रिक्ट द इम्पोर्ट्स फ्रॉम अदर कंट्रीज. तो डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली ये मतलब रोकना चाहता है इंपोर्ट को.
एंड हर कंट्री तो यही चाहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट हो, कम से कम इंपोर्ट हो। तो उसके लिए ये कुछ नॉन टैरिफ बैरियर्स हैं जो एक कंट्री इम्पोज करती है ट्रेडर्स पे। ओके, तो इनको आप हाईलाइट कर सकते हैं। द नेक्स्ट कमेंट दैट यू आर गोइंग टू गिव दैट, बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत बार हम लोग कर भी चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में। ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट्स बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले आप कॉन्ट्रैक्ट्स और एग्रीमेंट्स इन दोनों को डिफाइन करेंगे, दोनों को डिफरेंसेस लिख सकते हैं। तो ये चीज़ें आप अपने इसमें हाईलाइट कर सकते हैं। इजी क्वेश्चन है। पार्ट सी, इंडियन फॉरेन ट्रेड पॉलिसी डज नॉट फैसिलिटेट इंपोर्ट ऑफ टेक्नोलॉजी। ओके, तो ये इंडियन फॉरेन ट्रेड पॉलिसी जो है ये नहीं चाहती है कि टेक्नोलॉजी बाहर से इंपोर्ट हो। तो बेसिकली इसके लिए भी बहुत ज़्यादा स्कीम्स हैं, लेकिन गवर्नमेंट इतना ध्यान नहीं देती है, बिकॉज द गवर्नमेंट इटसेल्फ वांट्स दैट technology should be invented in India itself rather than we import technology from other countries। तो इसी चीज़ को लेके आपको कमेंट करना है। ये मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं इस क्वेश्चन के लिए, तो वो आप देख सकते हैं एंड अपने आंसर्स कंपोज कर सकते हैं। जो लास्ट कमेंट वाली क्वेश्चन है दैट इज़ ऑन न्यू क्लासिकल मॉडल फ्री ट्रेड थ्योरी, एंड इसके ऊपर भी न्यू क्लासिकल बेसिकली ये फैक्टर एंडोमेंट पे है। इससे पहले जो रिकार्डियन थ्योरी था ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिकली इट वाज रिप्लेस्ड बाय न्यू क्लासिकल थ्योरी जो भी बहुत पॉपुलर है। एंड अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी बेसिकली द टू कंट्रीज हैव द सेम टेक्नोलॉजी एंड द सेम फंक्शंस बट दे डिफर ओनली इन रेस्पेक्ट ऑफ रिलेटिव फैक्टर एंडोमेंट्स। तो यहाँ पे एंडोमेंट्स में लाइक यू नो जब एक कंट्री दूसरे कंट्री के साथ में ट्रेड करती है तो वो क्यों ट्रेड करती है, वाई, या फिर लाइक एक कंट्री दूसरे कंट्री से इंपोर्ट क्यों करती है। तो यही चीज़ें आपको यहाँ पे लिखनी है, बिकॉज एवरी ऑल काइंड्स ऑफ रिसोर्सेज आर नॉट प्रेजेंट इन ऑल द कंट्रीज। सो सम कंट्रीज हैव गुड लेबर, सम हैव गुड कैपिटल। तो जिसके पास में कैपिटल है उसके पास में टेक्नोलॉजी डेवलप कर सकते हैं, जिसके पास में लेबर है वो लेबर इंटेंसिव मेथड से प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो लाइक दिस, तो ये न्यू क्लासिकल थ्योरी जो आपको हाईलाइट करनी है इस आंसर में। ओके, ये कुछ इसके एजम्पशंस हैं न्यू क्लासिकल थ्योरी के, दैट मार्केट शुड बी वेरी परफेक्ट कंपटीशन होना चाहिए, एंड सम दिस कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल एंड ओनली गुड्स मूव फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसके। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। यहाँ पे है आपको लिखना है डिस्टिंक्शन बिटवीन द फर्स्ट वन इज कस्टम यूनियन एंड कॉमन मार्केट। कस्टम यूनियन basically it is a formal type of integration among two or more countries, and in this form of integration the member countries abolish all tariffs and barriers to trade themselves freely। तो ये हो गया कस्टम यूनियन का डेफिनेशन। कॉमन मार्केट में यहाँ पे कॉमन मार्केट जहाँ पे हम लोग बाइंग एंड सेलिंग करते हैं, तो इसके ऊपर आपको डिफरेंसेस लिखने हैं। सिंपल चीज़ है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। द नेक्स्ट वन इज गट एंड WTO। इन दोनों के ऊपर आपको डिफरेंसेस लिखना है, एंड ये भी मैंने एक्चुअली बहुत बार इसको मैंने एक्सप्लेन किया है अपने वीडियोस में। एंड ये WTO गट ऑलमोस्ट एमकॉम के बहुत सारे एक्चुअली चैप्टर्स में है, तो इसका डिफरेंस लिखना कोई बहुत बड़ा काम नहीं होगा। एंड द नेक्स्ट वन इज दिस वन, एक्सपोर्ट सेल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड डोमेस्टिक सेल्स कॉन्ट्रैक्ट, इसका डिफरेंस। तो यहाँ पर भी जैसे एक्सपोर्ट में यहाँ पे व्हेन ए ट्रेडर एक्सपोर्ट्स हिज गुड्स और सर्विसेज टू फॉरेन कंट्रीज, तो वो कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट। एंड डोमेस्टिक सेल्स में यहाँ पे द बायर्स एंड सेलर्स बिलोंग टू द सेम कंट्री, एंड हियर टू कंट्रीज इट इज़ मोर रिस्कियर एक्सपोर्ट बिकॉज इंटरनेशनल ट्रेड को इन्वॉल्व करता है, एंड दिस इज़ डोमेस्टिक ट्रेड। तो लाइक दिस यहाँ पे मैंने 4 पॉइंट्स लिखे हैं इसके, नॉट 4, इवन 5-6 पॉइंट्स हैं, तो ये आप लिख सकते हैं इसके अंदर अपने असाइनमेंट सॉल्यूशन में। द नेक्स्ट वन इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट एंड इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। एंड एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन आप लिख सकते हैं, इट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट इन विच द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट आर वर्बली कम्युनिकेटेड बिटवीन द पार्टीज इन्वॉल्व्ड, whereas in an implied contract, like it is understood and presumed or believed that both the parties are
are the member or they are in the contract. And basically यहाँ पे express contract में words are used, and this implied contract out of deeds or conduct of the parties. And here proposal and acceptance is done, and here also proposal and acceptance results in implied contract. एग्जाम्पल लिख सकते हैं एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट का लीज एग्रीमेंट, एंड हियर सेल इन ऑक्शन. सो जो पार्टीज ऑक्शन में प्रेजेंट है दे आर डीम्ड टू बी द पार्टीज. द लास्ट पार्ट ऑफ दिस असाइनमेंट इज शॉर्ट नोट्स यू हैव टू राइट. द फर्स्ट वन, पोर्टर्स व्यू ऑफ ग्लोबलाइजेशन. तो यहाँ पे ग्लोबलाइजेशन क्या है, तो पोर्टर एक बहुत बड़े फिलोसोफर थे जिन्होंने ग्लोबलाइजेशन को सबसे पहले दुनिया में बताया कि व्हाट इज़ दिस ग्लोबलाइजेशन, कैसा होना चाहिए एंड क्या एक्टिविटीज़ होती हैं इसके अंदर. जैसे यहाँ पे दो एक्टिविटीज़ पे इन्होंने ज़्यादा फोकस किया है, प्राइमरी एंड सपोर्ट एक्टिविटीज़. Again, primary activities are different types like inbound logistics, operations, outbound logistics, market, sales, services. तो ये सारे points आपको लिखने हैं पोर्टर्स ग्लोबलाइजेशन में. Some supporting activities are also involved in this, like procurement of goods, then technology development, uh, human resource management, then we have firm infrastructure. So all these things you can mention here. Then some dimensions are there on the basis of competitive scope, and dimensions of globalizations are also specified by Porter. So again dimension basically दो टाइप के होते हैं. वन इज कन्फिगरेशन ऑफ द फर्म एंड द अदर इज कोऑर्डिनेशन, जिसको आप लोग हाईलाइट कर सकते हैं अपने आंसर्स में. एंड हियर एज यू कैन सी हियर दैट कन्फिगरेशन एंड कोऑर्डिनेशन, इसके ऊपर 4 to 5 लाइन्स मिनिमम आप लिख के एक्सपैंड कर सकते हैं. द नेक्स्ट पार्ट of question number 5 is Hosmer's model of ethical analysis. Now what is right, what is wrong, what is fair, तो ये सारी चीज़ें हैं ethics की. And as a businessman, they should follow some type of ethics which are highlighted by Hosmer. Like all these 4 questions which are put up by him, like what are the best economic alternatives, what are the legal alternatives, like if the decisions are like if the decision results in greater benefits than damages to the society, or is the decision self-servicing or would be willing to have everyone else taking the same action when faced with similar circumstances. तो ये 4 questions put up किए थे for this analysis of ethics. And all these some more lines you can write here, like you can also mention the characteristics of the moral problems in management. So these are basically the solution of this. Then we have the next question, that is role of services in the economic development. Now ये easy है. Tertiary sector काफ़ी important होता है for any country because it promotes industrialization, because industries need various types of services, then growth of economy, then growth of agriculture, then increase in the productivity of the goods. So all these are only possible due to service sectors. Some more points you can write, like it provides good quality of life, then growth of market, then increase in the international trade. तो बहुत सारी benefits हैं service sectors के. And lastly it removes regional disparities. जो some states are more advanced than others, तो ये जो disparity है इसको remove कर सकते हैं. And last question is a note on Sale of Goods Act 1930, जो ब्रिटिश के टाइम पे, ब्रिटिश रूल के टाइम पे ये बना था. And basically it is a copy paste of the British constitution. And इस act में जम्मू एंड कश्मीर के अलावा all over India it is applicable, but now I think there are some changes in Article 370. तो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं ये इस एक्ट के, जैसे यू कैन हाईलाइट हु इज़ ए बायर, हु इज़ ए सेलर, एंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स विच आर इंक्लूडेड इन सेल of goods act. There are different types of goods which I have also mentioned here, like existing goods. Again they are of different types, like specific goods, then we have ascertained goods and unascertained goods. So इनके examples और इनके definitions आप लिख सकते हैं. Then we have future goods, contingent goods,
and some also provisions regarding delivery of goods and services. So all these forms a part of this Sale of Goods Act 1930. तो फ्रेंड्स, ये था असाइनमेंट सॉल्यूशन IBO 01 का, and in the next video I'll be sharing again the assignment solution of IBO 06. Till then, goodbye, take care.